Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack JEE NEET on PrecB Practice app. Download now. See, let's talk about charging and discharging of capacitor. इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर जो HCV में है वहां पे इसके ही क्वेश्चंस हैं. चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटर्स के क्वेश्चन दो जगह आपको दिखेंगे. चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग वाला जो क्वेश्चन है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में. सो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय चार्जिंग. पहले हम बात कर रहे हैं चार्जिंग की कि चार्जिंग से मतलब क्या होता है. चार्जिंग से मतलब होता है कि जब हम एक कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं बैटरी पे तो उसका चार्ज धीरे धीरे बढ़ता है और वो फिर मैक्सिमम हो जाता है और उसके बाद नहीं बढ़ता है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज चार्जिंग. फिर उस कैपेसिटर को किसी दूसरे चीज से कनेक्ट कर देते हैं तो धीरे धीरे कैपेसिटर जो है अपना चार्ज उस दूसरे ऑब्जेक्ट को सप्लाई कर देता है और उसके चार्ज फाइनली जीरो हो जाता है. दैट इज कॉल्ड एज डिस्चार्जिंग. तो ये कैसे चार्ज होता है, कितना समय लगता है, ठीक है. हाउ मच टाइम डज इट टेक टू चार्ज, हाउ मच टाइम डज इट takes to discharge, what is the total charge that is coming on the capacitor. All these things we will be studying here. Fine. So first I'll talk about charging. So there is a capacitor. This capacitor is connected across a resistor and a battery. Let's say this is V, this is R, and this is C. Fine. Now see, at t equals to 0, switch is closed. That means the moment you close the switch, you start the stopwatch. ठीक है, आपने स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दिया. जैसे ही स्विच बंद किया स्टॉप वॉच स्टार्ट हो गया. टाइमिंग 0 से स्टार्ट हो गया. हम देखना चाहते हैं कि ये जो कैपेसिटर है कितने देर में चार्ज होता है. दैट इज आवर एम. तो ये स्विच बंद हुआ, ठीक है. दिस स्विच गेट्स क्लोज्ड हियर. ये जो स्विच है, अब जैसे ही स्विच क्लोज होगा यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा. सम करंट विल स्टार्ट टू फ्लो एंड पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो पॉजिटिव इधर आना स्टार्ट होगा, नेगेटिव इधर की तरफ आना होगा. मतलब कि पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे धीरे धीरे पिक होके अक्रॉस द बैटरी मूव करके यहाँ पे आके डिपॉजिट हो रहे हैं. तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इस तरह से मूव कर रहे हैं. अब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहा है. So I know that I is equal to dq by dt. Fine. Let q charge appear on capacitor after time t. अभी पूरा चार्ज नहीं हुआ है कैपेसिटर, अभी q चार्ज आया है और चार्ज आएगा फ्यूचर में, लेकिन t टाइम स्टॉप वॉच पे हो चुका है, t सेकेंड्स. So there is q charge. So now I apply KVL, Kirchhoff's voltage law. Let's take a point A and move in a clockwise direction. ठीक है, A point से start होके clockwise direction में move कर रहा है. Fine Siddharth. सब what will we see first? सबसे पहले क्या आएगा? Plus V. Plus V. Excellent. Then minus IR. Very good. Minus IR. And then there will be capacitor. इधर की तरफ पॉजिटिव प्लेट है, इधर की तरफ नेगेटिव प्लेट है. पॉजिटिव इज हायर पोटेंशियल, नेगेटिव इज लोअर पोटेंशियल. सो वी आर अगेन मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल. तो माइनस q by c. Okay. बिकॉज q इज इक्वल टू cv होता है तो q by c इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0. So can I write like this? V minus dq by dt into R minus q by c is equal to 0. So let me rearrange this. CV minus q minus RC dq by dt is equal to 0. So I can write this as dq RC upon CV minus q is equal to dt. मैंने rearrange कर दिया ऐसे. Let's integrate both sides. जब टाइम 0 था तो चार्ज कितना था? 0 था. जब टाइम t हुआ तो चार्ज कितना हो गया? q हो गया.
Now I'll be integrating this. So this integration is ln of dq upon cv minus q. I can write this is ln of cv minus q, and this put a minus sign in front of it because coefficient of q is negative. The limit is from 0 to q, and on this side I can write dt integration is t upon rc. So I can further simplify this. This is ln of cv minus q upon cv. I put the limits, and this is minus t upon rc. So if I simplify this, I get q is equal to cv 1 minus e minus t upon rc. See, यहाँ पे जो the term that we are getting here, this rc, this is called as time constant, and this is represented by tau. So tau is equal to rc. Here cv is equal to q naught. This is the maximum current, maximum charge that can appear on capacitor. बताया था जब भी हम कैपेसिटर को V वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज कितना आता है, CV आता है. तो ये जो चार्ज CV है ये एकाएक नहीं आ जाएगा, ये धीरे धीरे करके आएगा. ठीक है, so I can even write this equation Q as Q naught 1 minus e to the power minus t upon tau. We say that when capacitor is fully charged, fully charged, it is called as steady state. जब fully charge हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, steady state कहते हैं. Fine, the charge is maximum. इस टाइम पे चार्ज जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा CV. अब हमें ये पता करना है कि ये स्टेडी स्टेट कितना समय लगेगा पहुंचाने में. ठीक है, मतलब ये जो फुली चार्ज होगा इसे पहुंचने में कितना समय लगेगा ये हमें पता करना है. एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट वी नीड टू डिस्कस हियर. चार्ज कितना हो जाएगा जब फुली चार्ज हो जाएगा, CV हो जाएगा. तो फाइनल चार्ज Q जो होगा वो CV हो जाना चाहिए. फाइन सिद्धार्थ. और Q नॉट का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वो CV है. So if I put CV is equal to CV 1 minus e to the power minus t by tau, so the current will become 0 in steady state. See, you surprise me a lot. ये सब अच्छा आंसर देके, because people are not able to give such answer. The current will become 0 in steady state. अब करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, ये पूरा चार्ट हो गया. ठीक है सिद्धार्थ. अब हम टाइम कैलकुलेट करेंगे कि कितना समय लगेगा इसे फुली चार्ज हो जाने में. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फुल चार्ज CV लिखेंगे, इधर भी CV 1 minus e to the power minus t by tau. Tau क्या है, RC. तो this gets cancelled out. We have 1 is equal to 1 minus t by tau. तो 1 cancel out हो जाएगा, e to the power t by tau is equal to 0. तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसके ऊपर नेगेटिव है e to the power minus x, 0 तब होता है जब x का वैल्यू इनफाइनाइट होता है. ठीक है, so from here I can say this implies that t is equal to infinite. तो स्टेडी स्टेट में कब पहुंचेगा, इनफाइनाइट टाइम के बाद पहुंचेगा. मतलब एक कैपेसिटर कभी भी फुली चार्ज नहीं हो सकता. फाइन. So a capacitor never is fully charged. लेकिन 99.5% हो जाता है तो हम उसे फुली चार्ज मान लेते हैं. When it becomes 99.5%, we assume it to be fully charged. So if Q is greater than 99.5% of Q naught, we assume it to be fully charged. हम ये assume कर लेते हैं. Fine. So basically this happens when t is equal to 5 tau. जो टाइम है वो 5 टाउ जब होगा तब ये हो जाता है. ये कैलकुलेट आप कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, मैं कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगा.
फाइन। तो 5 टाइम पीरियड, कभी लिखे कहीं क्वेश्चन में लिखा रहेगा हाउ मच टाइम डज इट टेक टू गेट फुली चार्ज, और इनफाइनाइट ऑप्शन नहीं रहेगा, देन सेलेक्ट द ऑप्शन 5 टाउ। और टाउ जो होता है आरसी होता है, टाउ जो होता है ये आरसी होता है। आरसी आर होगा मान लीजिए 100 ओम, लेकिन कैपेसिटेंस हमेशा 10 टू द पावर -6 में होता है, माइक्रोफैरेड में ही होता है। सी में कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होता है माइक्रोफैरेड में। तो बेसिकली दिस विल बी अराउंड 10 टू द पावर -4 सेकेंड्स। मतलब इतने सेकेंड में इसको 4 टाइम्स 5 टाइम्स कर दे, 5 into 10 to the not even a second it will take to be 99.5% charge. So capacitor gets charged within a fraction of seconds. Got it, Siddharth? Yes, sir. आपको मैंने एक आइडिया दे दिया, आरसी का वैल्यू जो होगा वो मिली सेकेंड और इन सब में होगा। देखिए अब एक अगला नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। when a capacitor is fully charged, it behaves as an open circuit. कोई भी सर्किट जब क्लोज रहता है तो उसमें करंट फ्लो करता है। जिस सर्किट में करंट नहीं फ्लो कर रहा है उस सर्किट को हम ओपन सर्किट कहते हैं कि भाई इसका तो तार ही जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए करंट नहीं फ्लो कर रहा है। तो यदि करंट नहीं फ्लो कर रहा है किसी भी कारणवश, तो हम कहेंगे कि भाई इसे तार मान लो कि इसका तार जुड़ा हुआ नहीं है। तो एक कैपेसिटर जिसमें एक रेजिस्टर लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, फुली चार्ज कैपेसिटर है, स्टेडी स्टेट में है, तो हम इस तरह से मान लेते हैं कि भाई वहां कैपेसिटर को भी हमने हटा दिया। यदि जब हम रेजिस्टर के बारे में बात करें तो भाई ये तो सर्किट ही कंप्लीट नहीं है। अच्छा, हाँ। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा इन द गिवन सर्किट द कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड या द कैपेसिटर इज इन स्टेडी स्टेट, ठीक है, तो बस आप समझ जाइएगा कि वहां करंट फ्लो, उस वाले वायर में तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है। एंड वन मोर पॉइंट हियर, when the time is 0, the current is maximum. जब टाइम 0 है तो उस टाइम पे करंट मैक्सिमम होता है, जब टाइम इनफाइनाइट हो जाता है तो करंट 0 हो जाता है, एंड वी कॉल इट एज शॉर्ट सर्किट। और उस शॉर्ट सर्किट अक्रॉस कैपेसिटर ये लिख देता हूं। तो कहीं पे भी कैपेसिटर हो और आपको क्वेश्चन में आ जाए फाइंड द करंट एट t इक्वल्स टू 0, तो कैपेसिटर हटा के उसकी जगह पे वायर लगा देना है आपको। Got it, Siddharth? Yes, sir. So these are very important points